हेलो एंड वेलकम बैक। एक और वीक एक और वीक में कुछ नए हाइज, लाइफ हाई से दूर रहे और आ गए हम वीकेंड पे। वीकेंड पे हम देखते हैं कि पूरा वीक कैसा गया और आने वाला वीक क्या होगा, और उसके लिए हम जाते हैं एके के पास। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं। Good evening. Good evening. How are you, Rajat? आई एम गुड, आई एम हैप्पी, यू टेल मी। Yes, I'm good. I'm good too. Life high, everyday story. अभी बिट बिट लाइफ ऐसे थोड़ा सा दूर रह गए ना, बस वो दो Right, वीक रह गया। बट क्या right. लगता है, मतलब आपको क्यों तो हम दूर रहे, और क्या नेक्स्ट वीक हम जाएंगे? देखिए Rajat, how this week has panned out is kind of it's very interesting actually. देखिए, if you remember last week when we ended the talk, I gave you the levels. I was expecting 26,000 to 26,100 kind of topping out. I was expecting market to touch that and reverse back because जैसे कि मैं आपको और बाकी सब व्यूअर्स को पिछले काफी वीक से बोल रहा हूँ कि ये जो यूएस ट्रेड डील पे जो बात हो रही है, आई विल सी इट एंड देन बिलीव इट। आई विल नॉट मतलब यूएस ट्रेड डील हो जाएगी, हो रही है, आज हो रही है, कल हो रही है, इस पे मैं स्पेक्यूलेट नहीं करूंगा बिकॉज इस पे स्पेक्यूलेट करना अब now it is quite, you must also understand that it's quite useless. We have been talking about US trade deal for a very long time कि होगी होगी होगी, न्यूज में भी आता है कि there are chances, we are very close, and somehow it is not happening. So on that basis, I thought that because the momentum last week was strong, we ended up on a very positive note and everything. एंड तो मुझे लगा कि एक बार 26,000 क्रॉस करके 26,100 तक जा सकता है मार्केट, एंड देन इट शुड रिवर्स बिकॉज आई रियली डिड नॉट एक्सपेक्ट कि यूएस ट्रेड डील की कोई बात भी होगी या आएगा, कुछ ऐसा आएगा. So हाँ। that something changed there. If you see this week, starting of the week से हम constant effort डाल रहे थे 26,100 क्रॉस करने की. If you notice, we closed above 26,000 on Monday, then we fell down on Tuesday, then we closed above 26,000 again on Wednesday. तो मतलब अगर and on Wednesday evening when I was seeing the month chart, one entire month chart, it Nifty had made 4 attempts to cross 26,100 in the whole month. राइट। Earlier in the month, 26,017 or 26,057. These were the two tops Nifty made and fell down. Then again this week on Monday it went up to 26,000 some 30 or something levels, and then again on Wednesday 26,067 or something like that. So so we are talking about a very tight 100-point range. उस 100 पॉइंट के रेंज में निफ्टी 4 बार टॉप मार चुका है एक महीने में. इट इज लिटरली नॉकिंग ऑन दैट लेवल, जो लेवल हम ब्रीच करने की ट्राई कर रहे थे. इट वाज नॉकिंग ऑन द लेवल, इट वाज इन द ऑफिंग, नो डाउट अबाउट इट. व्हाट आई वाज अज्यूमिंग इज दैट when we reach 26,000 or we cross 26,000, we will need a push. एक होता है ना, वो आग थोड़ी सुलगती है, आप थोड़ा उसमें घी डाल दो तो वो भड़क जाती है. तो वो उसी हिसाब से मेरे को लगा कि टिपिकली 26,000 26,050 तक मार्केट आएगा, थोड़ा थकेगा और इस न्यूज का पुश आ जाएगा, तो वी विल फ्लोट टुवर्ड्स 26,100 प्लस. नाउ व्हाट हैपेंड इज, अगर ये पुश जेन्युइनली आ जाता तो आई वुडंट हैव बीन सरप्राइज्ड इफ वी वुड हैव हिट लाइफ हाई. राइट राइट, फॉर तो श्योर। अगर if you imagine, if we are nearing about 26,100, let's say 26,90 or whatever, हम उस लेवल पे हैं और एक्चुअली यूएस ट्रेड डील की अनाउंसमेंट आती है,
तो 200-250 पॉइंट वहां से ऊपर कोई बड़ी बात नहीं है, तो 26,300 A तो single gap up can make it happen. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, इनफैक्ट इंट्रा डे कैन मेक इट हैपन। अगर दिन हाँ। में बीच में आ जाए तो इंट्रा डे भी खींच ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हम्म। हो जाता, अगर न्यूज आती तो हो जाता। ओके, हम्म। बट एज आई टोल्ड यू बिफोर कि ये न्यूज के एंटिसिपेशन पे, ये जो एंटिसिपेशन रैली होती है ना, ये कभी भी रिलायबल नहीं होती है रजत, कि ऐसा हो सकता है इसीलिए हम मार्केट में इन्वेस्ट कर लें कि चला Right. जाएगा ऊपर। ये थोड़ा इट्स एक्सट्रीमली हाईली रिस्की ऑल्सो, इट्स Right. हाईली स्पेक्युलेटिव ऑल्सो, एंड फॉर मी इफ यू आस्क मी इट्स नॉट एडवाइजेबल ऑल्सो। Right. तो यही हुआ ऑन थर्सडे। सो व्हेन वी आर ऑलरेडी यू नो जस्ट अबाउट 26 100 120, वो जो काफी दिनों से एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, हम Hmm. ऑलरेडी उस थ्रेशोल्ड पे थे जब। तो I don't know if you got it on WhatsApp or not. I got it as a WhatsApp forward that yesterday that the trade deal is finalized and at 7 p.m. there will be announcement. Announcing it. Right. So now, you and me both know that we should not, uh, Rely on believe WhatsApp. Right. believe in all this unless we have a something, something substantial from a genuine source, कि कहीं Right. गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कोई स्टेटमेंट दी हो या किसी लेजिटिमेट न्यूज चैनल में आया हो तो समझ में आता है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे बिलीव तो नहीं करना चाहिए, ये आपको मेरे को दोनों को पता है। बट प्रॉब्लम ये है कि रचित, when these things are circulated on a mass scale, Hmm. it may create little optimism, or even small bits of buying into Nifty may create a cumulative impact. Right. Because the So number of participants, even if they're small, the number is so high that even if yes, they punch their single trade, they can make this much amount of movement for sure. right, right, right. Hmm. In fact, Rachit, if you see how the global events have panned out, Hmm. this whole week has US and other markets, they have the news that has been highlighted is the so-called AI bubble that has Hmm. been there and affecting the IT. We saw shares of Nvidia and even Meta and all these Tesla, all related stocks. They took a beating this week. Right. Okay, and this was just before Nvidia's results, Hmm. which was surprisingly good. Fantastic sales figures, and I think that was also a reason why there was a covering in Nvidia stock, Hmm. covering in IT whole of IT worldwide. तो Right. वो सारे reasons भी थे. Okay, then our market has been playing on apart from the genuine valuation upside, or rewarding uh, the results that have come in the last month, where in most companies, in most cases, we have actually you know um, met our expectations, Right. if Right. not beaten. If not beaten, you can call it lower expectations or whatever, but I feel it's a very nice thing, in a market that is coming up from a slowdown. Hmm. I think it's best to keep your expectations rather prudent. Right. Don't over jump your gun. सो वो उस मैटर में बहुत अच्छा है कि दैट हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो रिलेटिवली नीचे ही था। मोस्ट हाँ. ऑफ आर कंपनी डिड वेरी वेल, तो उसका अपसाइड जेन्युइन था, वो जेन्युइन है, नो डाउट। उसके ऊपर की जो फ्रॉथिंग है निफ्टी पे, वो ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि भाई यूएस ट्रेड डील हो जाएगी, यूएस और चाइना में थोड़ा थोड़ा दे विल मेलो डाउन ऑन ट्रेड वॉर। Hmm. Putin is coming to India next week, I think, or next month it is. Next month. So Next month. next month. So talks will might lead to some sort of better understanding or some Hmm. sort of economic advantage. Uh,
case for cutting the rate in India, RBI's case is getting stronger and stronger. In fact, if you remember, last week we discussed that the CPI came in at astonishingly low number at Hmm. 0.25%. Okay, I read an article this week where a lot of economists have pointed out that RBI's system has been overstating inflation for the last two times. Their correction to CPI is as high as 0.7, 0.8% for the last two figures. Right. So it is now expected that the actual figure for inflation is actually lower than what RBI is stating. Okay. And if this is true, this further gives you room to cut rates. So So in ये that case, in the coming week, do we see a rally for RBI policy or what? देखिए Rachit, how things will play up, which news product will play up, which Hmm. news item will play up, that will depend rally or not. That Right. on that it's going to depend. What I'm trying to say is that there is a portion of this rally which is genuine, and there is a portion of this rally which is on anticipation, Right. anticipate rally on all these events happening. तो अब Hmm. जैसे आपने देखा कि बहुत एंटिसिपेशन कर दिया, बहुत कुछ फैला दिया कि यूएस ट्रेड डील हो जाएगी ऑन थर्सडे, मार्केट ऊपर चला गया, व्हेन नथिंग हैपेंड, फ्राइडे को एक स्टीप करेक्शन आ गया. In Hmm. fact, I was expecting markets to go down further, uh, uh, under 26,000 to close this week, but they have maintained that psychological mark. So that is a good thing, definitely a good thing. So I this itself suggests that Monday kharab opening nahi honi chahiye unless we see something very drastic coming in. But how even this level, I don't see that this level maintaining or sustaining anytime in the absence of actual, actual material coming in rather than only anticipation. So what are we doing next week? Are we going down? Are we going up? Or we are going nowhere? Rajat, to be honest, at 26,000 plus levels, I am personally not comfortable. Uh, in the absence of all these events, I still feel that the valuation or the upside that we have seen still holds certain part of that anticipation bit that I spoke about. Okay, so it needs to let go of that part and come down at a level where all of the upside in the Hmm. last month that we have seen is entirely based on our actual valuations, our corporate results, our performance as a country, as an economy, and as a company. Right. तो वो लेवल तक जब तक नहीं आएगा, और वो लेवल में मुझे लगता है वो लेवल आई थिंक इट शुड बी अराउंड 25 500 600. तो वो Okay. लेवल तक जब तक नहीं आएगा, आई विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल ऑन ऑन दिस upper end of this upside. So are you trying to tell us that next week we are heading towards 25,500? Rachit, surely I cannot tell you, but definitely I see markets under 25 800. 25 800 के नीचे ही होना चाहिए मार्केट. 26,000 में इसका कोई मतलब नहीं है. uh, उसके नीचे होना चाहिए, और एक टाइट अगर जैसे फॉर एग्जांपल मंडे या ट्यूसडे इफ इट गोज डाउन एंड सेटल्स अंडर 25 800, I feel that a small range for consolidation will be very nice for the market. It should spend some time in a 400 500 point range so Hmm. that it consolidates, and then it can move up or down wherever on basis of something solid, something that you can see, not some anticipation. मतलब Okay. ये वो बात हो गई रचित की. मैं मई में, जून में मैं
मॉनसून अच्छा प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं Q3 में फार्मर इनकम बढ़ जाएगी और मैं रूरल डिमांड बढ़ती हुई देख रहा हूँ, इसलिए मैं जून में कंजम्पशन स्टॉक्स लेने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरे को अगले मार्च में वो एंटिसिपेशन है मेरा कि अगले मार्च में इसकी डिमांड बढ़ जाएगी या टू व्हीलर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, तो मैं टू व्हीलर स्टॉक्स लेने लगा। दिस इज वेरी, दिस इज वेरी इमेजिनेटिव, ये सब आपकी इमेजिनेशन का खेल है। मतलब instead of having a great imagination, no doubt about it, Right. have a think beyond a point, but there should be something which is Making tangible, sense. which is Right, right. मतलब अगर आप genuinely देख रहे हैं कि भाई बैलेंस शीट में इतने सेल्स के फिगर अच्छे आ रहे हैं इन Hmm. आइटम्स पे, तो आप लीजिए, समझ में आता है। पर आप ये एंटिसिपेट कर रहे हो कि बरसात अच्छी होगी तो क्रॉप्स अच्छे होंगे, क्रॉप्स अच्छी होगी तो इनकम बढ़ेगी तो मोटरसाइकिल बिकेगी, ये क्या मतलब? Okay, so now I get it. That's there that the results were mixed bag and then the markets behaved accordingly. But this froth that we have seen in this week, we might see some froth cleansing, we might see some froth removal from the system, which might take the Nifty back to somewhere in between comfortable levels of 25,800 or say a more comforting level which can give it strength back into the system would be 25,500. Right. 26,000 and staying above 26,000 is giving us some sense of discomfort till the time we don't have a proper news, a data backed idea which can propel it further. So, till Yeah. that time, we're maintaining somewhere between. Okay, one thing more I would like to ask: is there any possibility we might touch 25,300 the coming week? Again, it's like I tell you, I've told you about my pendulum thing before, right? So Right. अगर हम फोर्स ऑफ सेंटर, अगर आप ये इमेजिन करें कि 25,500 और 25,800 एक सेंट्रलाइज्ड वो है, तो Hmm. any good news might swing it above 26,000, any bad news might swing it to 25,300, Okay. Okay. एंड टू एंड। 26,100 और 25,300 एंड टू एंड है, that in my opinion are the extreme ends of, even if we get some drastic news, either Hmm. good or bad, That's any the side। lowest low that we can see. हाँ, मुझे मुझे उससे मतलब I it will really require something very 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 drastic to happen to break 25,300। मुझे 25,300 के नीचे तो नहीं लगता है, not in the next week for sure। Salary. So 25,300, 25,500, 25,800, and Yeah, 26,100. We have this yeah, range. We can trade in these, ranges in between, and right, uh, and then take the things ahead. So, Chali, right। as always, it was amazing talking and learning about the markets, and we'll try and catch up the next week as well. Have a happy weekend. Thank you, happy weekend।